Hello to everyone. Welcome to the Hindu Newspaper Analysis. This is the official YouTube platform of the excelNsee and we are offering the classes for the UPSC 2027 Civil Service Examinations. The current affairs and especially the newspaper analysis is a very integral component of your entire preparation process. हम लोग यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, पीआईबी के रिसोर्सेस और ऑथेंटिक रिसोर्सेस को भी आपके सामने करंट अफेयर्स में प्रेजेंट करेंगे. So we are presenting the newspaper analysis is the Hindu Editorial Analysis of the 2nd July. So let's join us and let's start the discussion. There is a topic in the editorial, or the name is the energy architecture for the India's energy security or India's energy future. The editor and the writer actually highlighted that India is passing through a phase, a transition phase. इंडिया एक हैंड में अर्बनाइजेशंस, एक हैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशंस, एक हैंड में ग्लोबलाइजेशंस के साथ साथ एक सस्टेनेबल टारगेट्स के डायरेक्शन में मूव कर रहा है. सो टुडे we are actually requiring a unified policy for the energy security in the near future. Now this editor highlighted some of the facts, and all these facts will help you for the various general study domains. This topic is also helpful in the general study 1 जब आप अर्बनाइजेशंस की बातें करेंगे, स्मार्ट सिटी मिशंस की बात करेंगे. सो हियर एनर्जी गवर्नेंस इज इंपॉर्टेंट. सेकंड, इन your governance of the ES2, that is the GS3. These are the area which is going to cover through this article. Now this article highlighted, and there is a report by the Indian National Science Academy. This Indian National Science Academy, that is called INSA, say that एक यूनिफाइड फ्रेमवर्क की जरूरत है. We need an unified energy security framework, and it also say we have some of the ambitious targets. What are the target? That is by 2047 there is energy self-reliance. Second, by 2070 net zero emissions target को हासिल करने के लिए भी हमें एक यूनिफाइड एनर्जी फ्रेमवर्क की जरूरत है. इससे कि that this number of initiatives taken by the government of India, भारत सरकार ने काफी ambitious schemes लिया, like for example Sabhas schemes, the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, there is called renewable energy program, and there are perceptible and the substantive changes we have observed. Now renewable energy, their installed capacity, it has increased from the 40 gigawatt to the ambitious 260 gigawatt by 2025. Now हमारे energy systems की यदि बात करेंगे, the energy systems is basically diversified. There are the energy mix की बात करेंगे, so it is that is called huge targets are there. So उसके लिए now our managing the architecture should, how the energy should be affordable, sustainable and economic growth, and इसके लिए एक coordinated planning की जरूरत पड़ेगी, right? The further this article say how the framework works. So according to the Indian National Science Academy, there is called unified structure, और उस यूनिफाइड फ्रेमवर्क के 4 पिलर्स होंगे. देयर वुड बी द 4 पिलर्स, दैट इज 3A+S. व्हाट इज दिस 3A+S? कि जो एनर्जी सिक्योरिटी का यूनिफाइड फ्रेमवर्क होगा वो 4 पिलर्स पे काम करेगा. पहला पिलर, देयर शुड बी एडिक्वेसी. सेकंड, एक्सेस. थर्ड इज अफोर्डेबिलिटी, एंड फोर्थ इज सस्टेनेबिलिटी. सो दिस इज द 3A+S formula. It is basically given by the Indian National Science Academy policy framework. Now what do you mean by the first pillar? First pillar refers to the adequacy. Adequacy का मतलब कि that we have a diversified sources of energy supply, जिससे कि हमारा जो energy resilience बढ़े, और it will reduce the long term vulnerability as far as energy demand is concerned. So ये हमारा adequacy first pillar पे focus रहेगा. If we talk about the second pillar, ये access की बात करेगा. Access means there would be the last mile delivery, the service quality, and expanding the decentralized energy solution where it is appropriate. So this is called accessibility. Now third pillar of this unified program, unified policy, would be affordability. The unified architecture of the energy governance would be affordability. Affordability means that energy should be available to all. For this we require there is efficient market, उसके बाद innovative solutions, there is called consumer focused safeguards, and supporting the inclusive transitions.
that this is the third aspect, that is your affordability. Now, if we talk about fourth aspect, that is called the appropriate sustainability. Appropriate sustainability refers to a framework advocate solution that reflect India's unique social, economic and that environmental context. तो ये सारे चार बेसिकली कंपोनेंट्स की बात की गई है कि हाउ योर यूनिफाइड एनर्जी आर्किटेक्चर और फ्रेमवर्क शुड बी. So it has the four pillars. कौन कौन से फोर पिलर है? फर्स्ट is the adequacy, the second pillar is your access, the third component is affordability, and fourth is that is called the appropriate sustainability. ठीक है? I hope you got it all this. Now the further this the article or this editorial highlighted कि along with this और क्या करने की जरूरत है? Along with this we should promote the circular economy. Circular economy along with this CSE technology. CSE refers to the carbon capture, utilizations and the storage. So it would be an enabler provisions and circular economy जो कि 4R की formula, the recycle reuse की formula पे based होगा. So cross cutting enablers की तरह काम करेगा. Now it is only possible if we visualize this entire energy mix as a whole and unified demand and unified solutions, right? So it say the effectiveness can be enhanced through the greater coordinations and long term the strategic planning. How to achieve this architecture? अभी हमारे पास dependency है that India's energy security are largely dependent on, let's say, coal, renewables, biomass, natural gases. Also the import dependency is there. So how it is possible? When we visualize this energy solutions as a single integrated approach. This is the base, that is the thing the editor actually want to highlight. Editor का ये opinion है अपना. Now India's energy transition is not only about expanding the capacity. This is the punchline of this article. कि हमारे पास एनर्जी जो कैपेसिटी है उसका जो डोमेन, या जब हम लोग आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं तो इसका सिर्फ फोकस एनर्जी कैपेसिटी एक्सपेंशन नहीं है, रादर इट इज ऑल्सो अबाउट क्रिएटिंग ए रेजिलिएंट, affordable and sustainable energy system capable of supporting the future growth. That is, this energy would be a driver for your economic growth, the economic prosperity and overall the happiness and prosperity for your country as well as to the economy. So this is the article, that is, we need an unified energy framework for the near future of the energy demand of the country. So this is a very important article. This article will help you to the questions from your general study paper 2, general study paper 1, the general study, the governance aspect, the public administration optional, also in the case study. जब आप निबंध लिखते हैं तभी आपको ये टॉपिक हेल्प करेगा. So this is all about this editor, this article. Hopefully this video will going to help you to decode the essence of this article. Okay, thank you. So friends, let us take another article. This article is going to helpful for your the Panchayati Raj institutions, the conditions of the PRI institutions, and there is a report highlighted by the Ministry of the Rural Development. It simply say erosion in the Indian grassroots democracy. So ये टॉपिक है आपके जनरल स्टडी 2 में भी हेल्पफुल होगा, साथ ही साथ आप इथिक्स के टॉपिक में भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं एंड ओवरऑल जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एस्पेक्ट है उसमें भी आप इस टॉपिक को ब्रीफली कोट कर सकते हैं. नाउ लेट अस गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस आर्टिकल, और इसमें जो एडिटर है, द राइटर है, उनका क्या अपना व्यू पॉइंट है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे. So first thing is that this is a report by the Rural Development Ministry, they recall survey, and Rural Development Ministry say that there is erosion of the India's the grassroots democracy. You know that the 73rd Constitutional Amendment Act that basically embodies the Panchayati Raj system objective is to have the representative or participative grassroots democracy. But after its inceptions, अब हमारे पास 3 डिकेड से ज्यादा का जर्नी है, बट स्टिल दिस इंस्टीट्यूशन द PRI, जिसको कि एक इंस्टीट्यूशंस ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट ऐसा कंसीव किया गया है, स्टिल सफरिंग फ्रॉम लॉट ऑफ चैलेंजेस एंड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. द रिपोर्ट से देयर इज इरोजन इन दिस द ग्रासरूट डेमोक्रेसी एंड इट आल्सो हाइलाइटेड कि व्हाट आर द रीजंस, क्या फैक्टर्स हैं इसके. द फर्स्ट फैक्टर और फर्स्ट रीजन हाइलाइटेड, दैट इज योर द पार्टिसिपेशन फैटिग. The first reason for this erosion is the participation fatigue. Participation fatigue, this the report highlighted there, that the citizens are reluctant to participate in the
Panchayati Raj institution or the system. The second, the reason for this the erosion is that the Panchayati Raj institutions now becoming a clearing house for the central or state government policies and that scheme. This is the second the things it highlighted कि that ये पंचायती राज institutions एक अपने authority autonomy नहीं but एक tools की तरह काम कर रहा है and what is the tool? That is it is acting like what it is the clearing house for the central government or state government the schemes उसकी बातें कर रहा है. The first factor is the participation fatigue. This is the first factor. Second reason is that कि 73rd Constitutional Amendment Act जो कि ग्राम सभा को एम्पावर करता है लेकिन इट इज जस्ट एक्टिंग एज ए क्लियरिंग हाउस फॉर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कीम. ये सेकंड रीजन है. इट इज नॉट जस्ट ए पैसिव टूल्स, है ना. आप देखोगे कि इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि दैट देयर आर 18 से 28% ऑफ द रिस्पोंडेंट साइटिंग द लैक ऑफ आउटकम्स इन द रीजन फॉर लो इंटरेस्ट. कि जो पार्टिसिपेशन फटीगनेस है वो क्या है कि मीटिंग से कोई पॉजिटिव सब्सटेंटिव आउटकम्स नहीं निकलते हैं, है ना. इट इज जस्ट लाइक ए लीजर टाइम फॉर समटाइम्स वी कॉल इट लीजर इलिट्स. तो पहला चीज पार्टिसिपेशन फटीगनेस. सेकंड रीजन इज दैट द सेकंड रीजन is the lack of outcome. Now if you go to the third reason is the systemic errors. कि जो officials हैं the ग्राम पंचायत the secretaries जो ग्राम secretary पंचायत secretaries उनका officialdom character के चलते they simply say कि that नरेगा demands were not entered into the system. That is systemic problem. It is the highlighted. So अब हमको जरूरत है किसका कि that real time meeting का observations का. So the editor say and this report say कि there shall be increase in the greater use of this निर्णय applications. निर्णय ऐप का ज्यादा यूज हो. निर्णय applications you must note it down. जिसके चलते जो रियल टाइम मीटिंग्स है उसको हम लोग ओवरवाइज या सुपरवाइज किया जा सकता है. इसके अलावा और क्या बातें की गई है इसमें ये बातें किया गया है कि दिस रिपोर्ट से कि द पीआरआई इज जस्ट एक्टिंग लाइक ए प्लेग्राउंड फॉर द लीजर्ड इलिट्स. कि मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो कि लैंडलॉर्ड्स हैं उनके लिए पास्ट टाइम के जैसा काम कर रहा है. दैट्स व्हाई दिस इंस्टीट्यूशन इज नॉट वर्किंग टू दिस स्पिरिट. जिसका इसका ऑब्जेक्टिव है उस पर ये काम नहीं कर रहा है. ठीक है. नाउ इफ यू गो फर्दर इनटू दिस रिपोर्ट एंड दिस आर्टिकल इट सिंपली से कि another challenge with this Panchayati Raj system is the fund problems, fund issues, है ना. The challenges of the funds. funds की जहां तक बात है तो आप देखोगे कि पंचायती राज सिस्टम मोस्टली द ग्रांट्स पे डिपेंड करता है. तो ग्रांट्स जो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है वो बात कर रहा है. हालांकि द रिपोर्ट से कि दैट द 14th and 15th फाइनेंस कमीशन की बात करेंगे बट उसके बाद यहाँ पर ग्रांट पॉलिटिक्स चलता है. अब एक और इम्पोर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस रिपोर्ट ने हाईलाइट किया कि अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल इट से कि दैट जो पेशा एरियाज हैं, पेशा रेफर्स टू द एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज. कि जिन जिन एरियाज में पेशा एक्ट पेशा कानून को लगाया गया उन एरियाज में स्ट्रॉन्ग फिजिकल प्रेजेंस या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिला. ठीक है. स्ट्रॉन्ग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों देखने को मिला? बिकॉज द पेशा एक्ट से कि द कंसेंट ऑफ द ग्राम सभा बिफोर द लैंड एक्विजिशंस. ऐसी बातें हैं. So this is the important thing. You must note it down. ये important fact है, इसको याद रखना. But एक बात और कि मोस्टली जो पंचायत मीटिंग्स हैं वो पंचायत मीटिंग्स लोकल इश्यूज पे कम फोकस करता है. पंचायत मीटिंग्स का मोस्टली काम क्या है कि दे बेसिकली टॉक अबाउट कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं. जस्ट लाइक कि आप देखो यहाँ पर हाईलाइट किया गया कि द पंचायत स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम टू सेंट्रल प्रायोरिटी सच एज द ड्रिंकिंग वाटर एंड द सैनिटेशन. उन एरिया पे स्कीम पे ज्यादा चर्चा होती है. जो लोकल मुद्दे हैं लोकल इश्यू पे कम बातें होती है. दैट्स व्हाई जो आउटकम दैट इज नॉट वेरी अपीलिंग. सो लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो घटते जा रहा है. दैट्स व्हाई दैट इज समथिंग कॉल्ड पार्टिसिपेशन फटीग एंड इट इज ए ग्रेट चैलेंज टू दिस पंचायती राज सिस्टम. इस पे हमको ठीक करने की जरूरत है. इट सिंपली हाईलाइटेड गिव ए केस स्टडी दैट इज कॉल्ड हसदाव फॉरेस्ट में जो बेसिकली प्रोटेस्ट हुए उसका कारण भी यही था कि that is reluctance approach in your the panchayati raj systems. Many time the state government, the state officials simply bypasses this gram sabha क्योंकि ग्राम सभा के पास empowered किया गया है उनको कि लैंड एक्विजिशन प्रोसेस में उनसे पूछा जाएगा. they must obtain the consent but state government get many time the excuses, कभी कभी excuses के थ्रू या फिर they simply bypass these institutions and that अभी भी आप बोल सकते हो कि द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज सिंपली सफरिंग फ्रॉम द ब्यूरोक्रेटिक बोटलनेक एंड ब्यूरोक्रेटिक क्लचेस.
So this article will help you to write the case study, the decent answer, and also to highlight the challenges of the Panchayati Raj systems in India. पंचायती राज systems के current और contemporary challenge की यदि बात करेंगे, so that is called low outcome. This is the first challenge. Second challenge is the low participation rate, because these institutions acting as a clearing houses, this institution acting as a leisure time pastime for the contractors, the landlords. These institutions will not focus on the local issues. They give more time on that's called central government priorities, central government issues, और इसका objective क्या था? Just to take care about the local assets, the local resources. पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जिसको एम किया गया to act as an institution of the self government, but you understand that this institution is simply another channel or another branch for, you can call the adjunct branch for the central government, state government. तो कहीं ना कहीं इसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल इथोस, कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटिमेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव है, इट हैज बीन ब्रीच्ड एंड इट हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड. So this is the essence of this article. So in today's the class, this editorial analysis, we have covered the two very important articles and two very important topic that is going to help you in your GS mains answer writing. आप इसको connect करेंगे. The first article आज हम लोग जो बातें करी, the first article basically talks about the energy governance, the energy security and energy priorities and energy policy framework in the near future. What should be the way forward for the government of India and how it should work in a unified energy architecture. Second article, it focused on that this Panchayati Raj institution, which is the very fulcrum, the very instrument to convert the representative democracy into the grassroots participative democracy, but still after the 30 years of its inception, how this institution is suffering from the bureaucratic bottlenecks, the low morale and low lack of participation, and how this way this very objective has been breached and it's simply acting as an adjunct or defunct institutions. So these data and facts will help you to write the better answer. To you can quote this data and the facts into the case study and you have ability to write the better answers. So I hope this session must benefited you. This session is going to benefit you. So हम लोग इस तरह से जो अगले पार्ट ऑफ एडिटोरियल्स में आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो टुमारो दैट इज कॉल्ड द 3rd of July. So hopefully these sessions will definitely going to help you and to crack and to connect the current affairs with your the static part. So thank you very much.